Hello students, myself Dr. Girish Rai Singhani, Associate Professor, Department of Botany, SPC Government College अजमेर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रबर के बारे में और ये जो है इंक्लूडेड है बीएससी पार्ट थर्ड के सिलेबस पेपर थर्ड में। और जो हमने ये टेक्स्ट लिया है वो हम लिया है फ्रॉम द बुक इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी रिटन बाय त्रिवेदी, खान एंड रिजवानी। रबर जो है इसका बोटेनिकल नेम है हेविया ब्राज़िलियंसिस और फैमिली है इसकी यूफोर्बिएसी। हम हिस्ट्री की बात करें इसकी तो रबर हैज़ इट्स ओरिजिन इन साउथ अमेरिका। इट हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। अमेजोनियन इंडियंस यूज्ड क्याउट रबर जो था सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स फॉर मेकिंग बॉल्स, टॉर्चेज एंड वाटर प्रूफ कंटेनर्स। And Europeans noticed this in early part of 16th century. Spanish settlers in 1600 used it later for waterproofing shoes, clothes, hats, etc. In England, Joseph Priestley in 1770 discovered its ability to rub off pencil marks, because of which जो rubber था was called rubber. Now this is the figure which is showing the rubber growing regions of the world. जो rubber tree जो है the rubber tree is steady and fast growing and attains a height of 20 meters. जो rubber का tree जो है वो 20 meters तक height तक जाता है. The compound leaves are trifoliate in which each leaflet is elliptic, ovate with an acuminate apex. The aromatic unisexual flowers are borne in a panicle. The fruit is a capsule and descends explosively. This is a diagram of the flowering twig. Cultivation जो होता है रबर का, rubber tree require a tropical or subtropical climate with a well distributed rainfall of about 200 to 250 centimeters per annum. Temperatures ranging between 24 to 35 degrees centigrade and a well-drained loamy soil. The plant is usually propagated by seeds. Sometimes stem cuttings or budding techniques is used, and tapping begins when the trees are 6 to 7 years old and goes until they are 25 to 30 years old. 6 से 7 साल के इसमें टैपिंग शुरू हो जाती है और जब तक वो 25 या 30 साल का ओल्ड नहीं हो जाता। टैपिंग कैसे होती है? The methods employed in obtaining and preparing the latex have changed little over the years. बहुत सारा चेंज आ जाता है और जो है क्या कहते हैं when new tree, इसको हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, नया ट्री लोकेट करते हैं उसको हम when the new tree is located it is tapped at a point about 3 feet above the ground. 3 feet above उसकी टैपिंग की जाती है by cutting several short downward 30-degree and pain-like incisions in the bark with a special knife. The cuts are deep enough to sever latex vessels but do not extend for enough to injure the cambium. Cambium injure नहीं होना चाहिए, इतना deep cut होना चाहिए. Then ये देखिए डायग्राम है, ये incisions हमने दे दिए. उसके बाद cups are placed below the incisions टू रिसीव द लेटेक्स. उसके बाद जो लेटेक्स निकलता है उसके नीचे हम क्या करते हैं, कप्स को लगा देते हैं जिसमें लेटेक्स आता है विच फ्लोज फॉर सेवरल आवर्स. जिससे क्या होता है कई घंटों तक वो उसमें लेटेक्स फ्लो होता रहता है. देन द सेरेंग्रो मेक्स द राउंड ऑफ दिस ट्रीज ईच डे. देन सक्सेसिव टैपिंग्स कंसिस्ट ऑफ एंटायरली न्यू इंसिजन्स मेड स्लाइटली बिलो द प्रीवियस वंस. ये देखिए oblique incisions, V-shaped incisions, spiral incisions, ठीक है. और सक्सेसिव टैपिंग्स करते हैं, एंटायरली न्यू इन्सीजन्स बनाए जाते हैं और बिलो उसके नीचे किसके जो पहले आपने इन्सीजन्स लिए हैं उसके नीचे दूसरे इन्सीजन्स दिए जाते हैं. द लेटेक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम द कप्स एंड कैरीड टू द कैम्प फॉर कोगुलेशन. दिस इज डन बाय कोटिंग अ पोल विथ लेटेक्स एंड सस्पेंडिंग इट ओवर अ फायर मेड ऑफ पाम सीड्स और स्पेशल वुड्स. These yield a dense smoke containing acetic acid and tar which coagulates the latex, forming a layer of crude rubber.
The process is repeated until balls weighing 125 to 200 pounds are obtained. In some areas, paddles are dipped in the latex and held in the smoke. The balls are shipped to mills for processing. Then increase of flow of latex is affected by treating the bark below the tapping cut with hormones. Seedling trees respond better to such hormone treatment than bud grafts. Poor yielding trees are thus converted into high yielding ones. Fresh latex is preservative susceptible to enzyme and bacterial action leading to acid formation and coagulation. Preservatives such as formaldehyde, NaOH, soap, and bactericides are added to the latex at the time of collection to inhibit usually a small quantity of ammoniated water. Ammoniated water is placed in that collection cup to prevent coagulation. ताकि coagulation नहीं हो उसमें ये चीज़ें ऐड की जाती हैं. An addition of parts of 25% ammonia solution to 100 parts of latex ensures stabilization of latex for 6 months. और उससे क्या होता है 6 महीने के लिए हम क्या कहते हैं लेटेक्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं और इसको हम नॉर्मल लेटेक्स कहते हैं. एंड देन बाय एवेपोरेशन एंड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन it is concentrated to give a product with higher solid contents. Concentration by decantation is popularly practiced. The latex is a colloidal suspension of rubber particles in an aqueous serum. Other constituents in the latex are proteins, resins, sugar and glycosides, tannins, alkaloids and mineral salts. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रबर की. Now raw rubber is obtained from latex. It is of two types. इसको बोलते हैं smoked sheet rubber and crepe rubber. Next is the properties of rubber. रबर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? Rubber is an airtight, waterproof, persistent, flexible and elastic substance which is a good insulator of heat and electricity. Natural rubber is soft and translucent at ordinary temperatures, but 0 to 10 degrees centigrade is hard and opaque. It loses elasticity and becomes sticky at temperatures above 25 degrees centigrade. It is insoluble in water but dissolves in organic substances. Chemically, rubber consists of 92 to 94% rubber hydrocarbons, 3% resin and 2% protein. Isoprene C5H8 is a fundamental unit of rubber. Then is vulcanization. Rubber is flexible at higher temperature and brittle at lower temperatures. Hence, it requires suitable treatment for industrial use. This treatment is known as vulcanization. And in this process, rubber is heated with varying quantities of sulfur under pressure at 150 degrees centigrade. अब हम uses की बात करें. About 70 degrees centigrade of rubber production is utilized in the manufacture of tires and tubes. It is also extensively used in electrical goods, waterproof materials, baskets, rollers, sports goods, medicines, clothing, etc. It is used as shock absorber in fixing heavy machines and rollers. Articles used in hospitals like gloves, catheters, enema, hot water bags are made from rubber. Hard rubber or highly sulfurized rubber is widely used in the radio engineering industries. उसके अलावा several articles of daily use such as adhesives, tapes and erasers etc. जो अपन normally use करते हैं commonly, they are also made from the rubber. So these were about the common uses of the rubber और ये हमने discuss किया. And
द इकोनॉमिक बॉटनी के मोस्ट ऑफ द जो है टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं. फ्रॉम द नेक्स्ट टर्न वी विल स्टार्ट विद द योर इकोलॉजी पार्ट, इकोलॉजी एंड योर environment plots.